Adipurush movie review. The eagerly anticipated Adipurush, starring Telugu actor Prabhas and Kriti Sanon, is now playing in theatres all over the world. Ramayana, a Hindu epic, is retold in the mythological drama. Prabhas portrays Lord Ram in the Om Raut-directed movie, while Kriti Sanon plays Sita, Sunny Singh plays Lakshman, and Saif Ali Khan plays Ravan. The story of Adipurush starts with Lakshman chopping off Shurpanakha's nose and the latter encouraging her brother, Ravan, to abduct Janki. The king of Lanka then concocts his wicked scheme as Raghavan and Janki continue to live in peace in their tranquil residence in the middle of a jungle. In a musical sequence, Saif Ali Khan's Ravan makes his entrance while playing what is likely the Ravana Hattai in his cave-like home. If Ramanand Sagar's representation of Ravan in the 90s scared you, just wait till you see this modern retelling of the mythical figure, which features a wild man on a dragon's back. We break down what works and what doesn't work for the film. 4 things that work for the film. Background score and music. The film's soundtrack and background score make up for the actors' weak performances in the scenes. Couple of elements of the movie that aren't disappointing are the catchy beats and songs like Sonu Nigam's rendition of Tu Hai Sheetal Dhara. Costume design. The movie, which takes its cues from old Indian culture, made an effort to maintain the traditional looks of the characters to some extent. Even if there aren't many references to go on, what we have seen on screen so far isn't too distant from this. Mystical imagery. The film definitely does not depict a typical region that Raghav and Janki are living in after leaving their realm. The makers granted themselves enough artistic freedom to come up with a setup that is fascinating to watch. Crisp storytelling. The storytelling of the Ramayana is fairly simple since the mythical tales are broken down into brief, episodic chapters. Since there isn't enough time, none of the sequences dragged. Cringe dialogues. The film's cringe-worthy dialogues are one element that almost makes you want to leave the theater. If you thought Brahmastra was awful, wait until you see this. Bad performances. Unfortunately, every performance in the movie is just as weak, therefore none stand out. Even Saif Ali Khan, whose character had a lot of terrifying elements, struggled to leave a lasting mark. Mediocre VFX. The movie has received criticism for its underwhelming visual effects ever since the release of its trailer. On the whole, it is dismal, with a few exceptions here and there. Poor action scenes. One of the movie's crucial narrative facets is the clash between Raghav and Ravan's army, but it isn't handled as meticulously as it ought to be. The overdone performance during these scenes takes away from the narrative. तो सॉरी गाइस, आदिपुरुष का मैं बहुत लेट रिव्यू कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं है ना एनिमेशन में सोच रहा था कुछ अलग सा इस बार किया जाए। सब लोग एक जैसा कर रहे थे, इस बार मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए, इसलिए गाइस मैं एनिमेशन की वीडियो बना के आपको रिव्यू देना चाहता था। तो गाइस जैसा मैंने सोचा था कि आदिपुरुष में काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, कुछ हटके है, VFX होगा, सब कुछ अच्छा होगा, पर गाइस जब मैं देखने गया तो उतना भी मतलब बेटर नहीं है। और ऊपर से है ना उसमें VFX थोड़ी थर्ड क्वालिटी की यूज़ की गई है। और गाइस जैसे मैंने ट्रेलर और सॉन्ग्स देखा था आदिपुरुष का, उस हिसाब से मेरे को मूवी नहीं लगी। पर हाँ, सैफ अली खान का जो रोल था, वो जो रावण का, वो काफ़ी ज़बरदस्त और कैरेक्टर के साथ था। और प्रभास का तो था ही, पर सब मतलब पब्लिक का भी रिव्यू ये था कि उतना खास नहीं है, क्योंकि है ना आदिपुरुष सब लोग देखने इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये एनिमेशन मतलब समझ लो कि आजकल की दुनिया में एनिमेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने एनिमेशन से आपको रिव्यू दिया। और लास्ट में मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ आपको, क्योंकि गाइस है ना VFX ये सब के लिए सब सारी पब्लिक गई थी, क्योंकि रामायण तो बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं और हम स्टोरी लाइन ये सब नहीं देखने गए थे, डायरेक्ट हम लोग गए थे VFX और वो सब जो 3D में बताई जाएगी वो देखने गए थे। पर गाइस हमें तो कुछ और ही दिख गया।
और थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। पर हाँ, जब है ना ये 100 मिलियन करोड़ से ऊपर जाएगी, जब अभी तो फर्स्ट डे है, आज 16 तारीख को ही रिलीज हुई है, सुबह ही गए थे, सुबह का है और मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गया था, इसके लिए ज़्यादा में देर हो गया। पर गाइस जब ऊपर जाएगी, हाई लेवल पे जाएगी जब ये मूवी, तब है ना बाहर के देश वाले देखेंगे, तब थोड़ा हमारे इंडिया को डब पड़ेगा, क्योंकि हमारी VFX अभी भी स्लो चल रही है, मतलब एनिमेशन सेक्टर अभी भी हमारा स्लो चल रहा है, उतना फास्ट नहीं चल रहा। तो मैं मूवी के बारे में यही कहना चाहूँगा, मूवी थोड़ा बेटर भी है, अच्छी भी है और थोड़ी ख़राब भी है। ख़राब इसलिए है क्योंकि एनिमेशन के लिए सारी पब्लिक गई थी कि उसमें VFX कैसे है और क्या क्या है। मूवी का रामायण तो हर कोई देखा हुआ है और ये कुछ अलग देखने के लिए सारी पब्लिक गई थी, पर इसमें थोड़ा हटके नहीं था। तो गाइस आपको ये वीडियो और मेरी एनिमेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आपके अभिषेक को सपोर्ट करना गाइस। मैं आप पब्लिक के लिए मैंने कुछ अलग सा किया है, एनिमेशन ला के रिव्यू दिया है गाइस, तो हमें सपोर्ट करें एंड थैंक यू सो मच और आपका अभिषेक कियो।